Hey, good morning class. I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So myself Anil Adhikari, PGT Mathematics from DPS Lamachor, and today I am going to discuss our next part of 3D. In my previous video I have discussed about line, its equation, various form of lines. Okay, today I will discuss first the shortest distance between any two lines, then I will proceed to the questions which comes in our previous years. Okay, and we will discuss one by one each question. Okay, so let's start the video. So dear student, the very first topic today I am going to discuss is SD. It means shortest distance between two lines. Okay, so shortest distance between two lines. Okay, so the very first we will discuss skew lines. First we will discuss skew lines. So what is skew lines? Basically, if any two lines are neither parallel nor intersecting, then such kind of lines are said to be skew lines. So what is the definition? Any two lines which are neither parallel nor intersecting are called skew lines. Okay, so such kind of lines are lies, या you can say exist into different kind of planes. एक प्लेन में दो लाइन एक साथ इंटरसेक्ट या फिर पैरेलल तो करेंगे तो स्क्यू लाइंस हमेशा दो डिफरेंट प्लेन्स में एग्जिस्ट करती हैं. ओके, नाउ द सेकंड पैरेलल लाइंस. So I hope you know about parallel lines. The lines, let it be L1 and let it be L2. Okay, so any two lines distance between them at each point, yeah, you can say at every point remains constant are called parallel lines. Okay, so any two lines, the distance between them remains parallel at each point of both of the lines, then it is called the parallel lines. ठीक है, let अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच की देखें या फिर यहाँ पे देखें. ओके, सो जो डिस्टेंस यहाँ पे रहेगी वही डिस्टेंस यहाँ पे रहेगी. इट मीन्स दैट बोथ लाइन possess the constant distance थ्रू आउट बोथ द डायरेक्शन. ठीक है, एज वेल एज अगर हम इसको इंक्रीज करें इस डायरेक्शन में या फिर पीछे की ओर को, जो डिस्टेंस है इनके बीच की, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट. सो सच काइंड ऑफ लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्क्यू लाइंस. ओके, सो SD बिटवीन स्क्यू लाइंस. So as I told you, two lines are said to be skew lines if both are neither parallel nor intersecting. So let the first equation of line be r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector. Let it be the first line. The second line is r vector is equal to a2 vector plus lambda time b2 vector. Let it be the second line. Okay, r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector. Now since we know that the vector equation of any line is denoted by r vector is equal to a vector plus lambda b vector. Okay, where what is a? Where a is the point, the position vector of the point from which the line is passing out, and b vector is the vector to which the line is parallel. ठीक है, b is a parallel vector to the line and a vector is the position vector of the point from which the line is passing out. Okay, so let this is line first and this is the vector equation of line second. Now the distance between these two skew lines in vector form is a2
minus a1 dot product with the unit vector of b1 cross b2. It means b1 cross b2 divided by its magnitude. Okay, this is the vector formula. And for Cartesian formula, so in Cartesian form, the distance, shortest distance is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2, its determinant divided by the square root of b1 c2 minus b2 c1 square प्लस ए बी सी, बी सी, सी के बाद फिर ए आता है तो सी का ए के साथ कॉम्बिनेशन, इट मीन्स सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू होल स्क्वायर एंड देन बी सी सी ए बी. ठीक है, तो देन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर. ओके, होल स्क्वायर. So this is the vector equation, Cartesian form of distance between any two skew lines, and this is the vector formula for distance between any two skew lines. Now we will discuss about the shortest distance of any two parallel lines. Okay, shortest distance between parallel lines. So dear student, as I know, if any two lines are parallel, then their parallel vector must be same, or you can say proportional. So let r vector is equal to a1 vector plus lambda time b vector, let it be line first, and r vector is equal to a2 vector plus lambda b vector, let it be line second. ठीक है, कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको दी होगी एग्जाम में. Now the SG, shortest distance between both of them, will be a2 minus a1 vector cross product with the unit vector of b, where b is the parallel vector. Okay, so b vector divided by its magnitude. This is the formula of shortest distance in vector form. Okay, so if you have given any two equation, vector equation of any two lines, then first we will identify either the parallel vector is same or not. ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया नहीं होगा कि लाइंस पैरेलल हैं या स्क्यू हैं. वी हैव टू आइडेंटिफाई इट, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय वाचिंग द पैरेलल वेक्टर. इफ द पैरेलल वेक्टर इज प्रोपोर्शनल और इक्वल, देन द लाइंस विल बी पैरेलल वेक्टर्स, सॉरी पैरेलल लाइंस. ओके, एंड if the parallel vector of both the lines are different, or you can say distinct, then both the lines are skew lines. और अगर skew lines हैं, then the vector formula is this and the Cartesian form is this to find the shortest distance between them. And if the lines are parallel, then this is the formula for finding the shortest distance between both the lines. Okay, now I am going to discuss some previous year questions. Okay, so let's start. So okay, this is the 1 marks question. Write the distance of a point. ठीक है, first we will discuss 1 mark question. Okay, write the distance of a point P having coordinate A, B, C from x-axis. From x-axis. So here we have to find out the distance of this given point from x-axis. So as I told you, as I taught you about the formula from x, y and z axis, the distance formula. Okay, again I am telling you, distance of any point, distance of any point P x, y, z from dash, in first case x axis. अगर x एक्सिस से तुम्हें किसी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, सो व्हाट इज द फार्मूला? रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, एलिमिनेट द कोऑर्डिनेट ऑफ x. सेकंड, इफ यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस,
then eliminate y coordinate, then the distance will be root x square plus z square. And if you want to find the distance from z axis of any given point, then eliminate its z axis, that is root x square plus y square. So here the matter of concern is that we have to find out the distance of this given point P having coordinate ABC from x axis. So what will be the distance? x axis से डिस्टेंस चाहिए, सो रिमूव x कोऑर्डिनेट, सो रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था. ठीक है, okay, next question. So the next question is, if the Cartesian equation of a line is 3 minus x upon 5 equal to y plus 4 upon 7 equal to 2z minus 6 upon 4, okay, then write the vector equation of the line. Since this is 1 marks question and here we have given the Cartesian equation of this line and we need to find out its vector equation. So since we know that the vector equation of any line is r vector is equal to a vector plus lambda b vector, where a vector is position vector of the point from which line is passing, okay, and b vector is the parallel vector of line. ठीक है, so from the given equation first we have to reduce this formula in the standard form. What is the standard Cartesian form of equation of a line? X minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. This is the standard equation of a line passing out from one given point and parallel to a given vector. So here we have given 3 minus x, so we will take minus common and this will be x minus 3 upon 5 equal to here y plus 4 upon 7 equal to here, from here we have to take 2 as common because in standard format there will be z minus z1, so 2 को common लेंगे बेटा, so it will be z minus 3 divided by 4, so this will cancel out 2 time and here we can write it x plus minus 3 upon minus 5, okay, equal to y, या तो इसको ऐसा करिए, ऐसे रहने दीजिए, x माइनस 3 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2. नाउ द पॉइंट इज, पॉइंट क्या मिल रहा है यहाँ से 3, यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा, z प्लस 4 था तो माइनस 4 है ना, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, z प्लस 4 ही कर दो इसको, ठीक है. तो यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे 0 के, तो y विल बी माइनस 4 एंड z विल बी अगेन 3. So this is the point. So its position vector is represented as 3i minus 4j plus 3k, okay, and what is the direction ratio of parallel vector? Minus 5, 7 and 2. So b vector will be minus 5i plus 7j and plus 2k. So now the required vector equation is r vector is equal to a vector, that is 3i minus 4j plus 3k, okay, plus lambda time b vector which is given as minus 5i plus 7j plus 2k. So this is the required vector equation of the line.
which is given in Cartesian form as this. Okay. Now the next question is write the equation of a straight line through the point alpha, beta, gamma and parallel to z axis. Here we need to find out the equation of any plane, any line which is passing out through a given point, and the coordinate of point is alpha, beta and gamma and is parallel to z axis, और जो कि पैरेलल है किसके, z axis के. Okay. So dear student, for finding the vector as well as you can say the Cartesian equation of any line, we have to have any 2 points. Okay, we need 2 points, 2 things. The very first, the point from which the line is passing out, and the second thing is the parallel vector to which the line is parallel. ठीक है. तो यहाँ पे पॉइंट हमको गिवन है अल्फा, बीटा, गामा. ठीक है, इस पॉइंट से लाइन पास होके जा रहा है एंड इज पैरेलल अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल है. तो इफ एनी लाइन इज पैरेलल अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे जेड एक्सिस के क्या होते हैं 0, 0, 1. दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जेड एक्सिस. ओके, जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो ये है, तो वो जो लाइन है जो जेड एक्सिस के पैरेलल है तो उसके भी डायरेक्शन रेशियो यही होंगे 0, 0, 1. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस अल्फा अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस बीटा. व्हाट इज बीटा? बीटा ही है यहाँ पे, अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन 1. This is the required Cartesian equation of the line which is passing from the given point alpha, beta, gamma and is parallel to z axis. So z axis के डायरेक्शन रेशियो होते हैं 0, 0, 1. तो उस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो 0, 0, 1 हो जाएंगे बिकॉज इट इज पैरेलल टू z एक्सिस. तो पैरेलल वेक्टर z एक्सिस के पैरेलल होगा. सो उस वेक्टर के भी डायरेक्शन रेशियो 0, 0, 1 हो जाएंगे. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x माइनस अल्फा अपॉन 0 इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन 1. ओके, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, the next question is find the direction cosine of the line. Find the direction. We have to find out direction cosines of the line, and the equation of line is 4 minus x upon 2. 4 minus x upon 2 is equal to y upon 6 equal to 1 minus z upon 3. And we need to find the direction cosines of this given line. Okay, so very first we will reduce this Cartesian form of line into standard form क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं अभी. ठीक है, so since we know that the Cartesian equation of line is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. Okay, this is the standard form, but here we have given 4 minus x, so we will take minus common and write it like x minus 4 upon minus 2. ठीक है, नेगेटिव माइनस कॉमन लेके डिनोमिनेटर में भेज देंगे हम उसे, एंड दिस कैन बी रिटन एज y minus 0 upon 6 equal to here again take minus common so that it will z minus 1 and take minus 1 in the denominator. ठीक है, now since minus 2, 6 and minus 3, this is the direction ratio of the parallel vector. ठीक है, so a is equal to minus 2, b is equal to 6
and c is equal to minus 3. Now we know that L is equal to a upon root a square plus b square plus c square plus minus, because लाइन इज टू वे डायरेक्टेड, तो लाइन के दोनों डायरेक्शन में दो डायरेक्शन होती है लाइन्स की, तो इसलिए प्लस माइनस आएगा यहाँ पे. ओके, सो द वैल्यू ऑफ L विल बी -2 अपॉन रूट -2 स्क्वायर दैट इज 4, 6 स्क्वायर दैट इज 36, -3 स्क्वायर दैट इज 9, दैट इज -2 अपॉन रूट 36 plus 4 40 plus 9 49. So the value of L will be -2 upon 7. Similarly M will be b upon root a square plus b square plus c square, that is what is the value of b? 6 upon 7, because magnitude of this direction ratio as we find it 7, and n will be c upon root a square plus b square plus c square. So the value of c is -3 upon magnitude of direction ratio, which is 7. So L is equal to -2 upon 7, M is equal to 6 upon 7, and n is equal to -2 upon 7. So this is the direction cosines of the given lines. Okay. Now next question, ये क्वेश्चन दिल्ली 2013 में आया हुआ है 1 मार्क्स में. इफ अ यूनिट वेक्टर ए makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with J, and an acute angle theta with K, then find the value of theta. Okay, let us make a diagram to better understand this question. Since we have given any unit vector, let it be a vector. ठीक है, हमें कोई वेक्टर दे रखा है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो इसको हम डिनोट करेंगे a कैप से. सो द एंगल विच this unit vector making with x axis, ठीक है, is pi by 3, with y axis is pi by 4, and with z axis it is making an acute angle theta. So we have to find out the value of theta. Since we know that L is equal to cos theta, so cos, what is theta? Pi by 3, है ना. As I told you while I taught you regarding the direction cosines of any vector, or you can say any line, then I told you that if any vector is making alpha, beta and gamma angle with x, y and z axis, then their cosine is known as direction cosines. So here you can see that this unit vector A making pi by 3 with x axis, so cos alpha will be cos pi by 3. So the value of L will be, what is the value of cos pi by 3? Cos 60, that is 1 by 2. M is equal to cos, what is the angle which this unit vector making with y axis? Pi by 4. So M will be cos pi by 4, that is 1 by root 2, and n is equal to cos theta, because theta is the angle which the line is making with z axis. Now we know that the relationship between direction cosine, that is L square plus M square plus n square is equal to 1. So putting the values here, we get L square, it means 1 by 2 square, plus M square, it means 1 by root 2 square, plus n square, it means cos square theta is equal to 1. Okay, so 1 by 4 plus 1 by 2 plus cos square theta is equal to 1. So this imply cos square theta is equal to 1 minus 1 by 2 minus 1 by 4. Okay, or you can say 1 by 2, 1 minus 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by 4, that is 1 by 4. So cos square theta is equal to 1 by 4. This imply cos theta equal to plus minus 1 by root 2. Since the angle which the unit vector making with z axis is acute angle, so we will leave the negative sign over here. So cos theta is equal to 1 by root 2. So the theta will be 45 degree, or you can say pi by 4. ठीक है. Next question. कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, ठीक है, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, 1 बाई 4, ठीक है, सही है ये, है ना. इनका आंसर गलत है यहाँ पे. इनका आंसर होगा बेटा, हमारा ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the Cartesian equation of the line which is passing through the point, let it be P,
-2, 4, -5 and parallel to the line, and the equation of line is given as x plus 3 upon 3 equal to 4 minus y upon 5 equal to z plus 8 upon 6. So here we need to find out the equation of a line which is passing out through this given point and is parallel to this given line. ठीक है, तो अगेन पॉइंट हमें पता चल गया, और सिंस इफ अ लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन देन द पैरेलल वेक्टर विल बी सेम, है ना. अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, सपोज दिस इज L1 and suppose this is L2 and let this is B vector which is parallel to N1, suppose this is B vector which is parallel to L1. Okay, so if the line L1 and L2 both are parallel to each other then this B vector must be parallel to this L2. तो कहने का मतलब दोनों का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो सेम होगा. तो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो 3, 5 और 6 हैं यहाँ पे, ऐसा हमें दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है. क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो वी विल do it in the standard form, reduce it, x plus 3 upon 3 equal to, here we have to take minus common so that it will be y minus 4 and take minus in the denominator equal to z plus 8 upon 6. Okay, now this is the standard form. Okay, now this is the standard form. So the direction ratio of the parallel vector will be 3, a is equal to 3, b is equal to -5, c is equal to 6. So the required equation of line will be x minus, what is x1? -2, so this will be plus upon a equal to y minus y1 is 4 upon -5 equal to z minus z1 is -5, so this will be plus 5 upon 6. So this is the required equation of the line which is passing out through this given point and is parallel to this given equation of line. Okay, pause the video and take the screenshot. Okay, okay. The next question is, if a line has the direction ratio 2, -1 and -2, this question comes in Delhi 2012 of 1 marks. If a line has the direction ratio 2, -1, -2, then what are its direction cosine? As I told you, if you have given the direction ratio ABC of any line, then the direction cosines L, M, N can be easily find by using the formula L is equal to A upon root A square plus B square plus C square, M is equal to B upon root A square plus B square plus C square, and N is equal to root A square plus B square, N is equal to C upon root A square plus B square plus C square. Okay, so this is same question. Next question number 8, what are the direction cosines of a line which makes equal angle with the coordinate axis? This is very important question and comes 3 times in 2011, 2009 and 2008. So the question is, we have to find out direction cosine of a line which makes equal angle with the coordinate axis. Let it be x axis, this is y axis and this is z axis.
let this is the line. Okay, let it be the line. Since it is given that the line is making equal angle with all three coordinate axes, it means that alpha is equal to beta is equal to gamma. ये हमें given है, it is given. Okay, so cos alpha must be equal to cos beta and it must be equal to cos gamma. Now since we know that L square plus m square plus n square is equal to 1, or we can say cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. This is the relationship between diagonal cosines of any line. Now since all three angles are equal, so we can write it like cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha equal to 1, because the line is making equal angles with the coordinate axis. So alpha equal to beta equal to gamma, and hence cos alpha equal to cos beta is equal to cos gamma. So we can write cos beta and cos gamma as cos alpha and cos alpha. Okay, so 3 times cos square alpha equal to 1, and this imply cos alpha is equal to plus minus 1 upon root 3. So alpha will be cos inverse 1 by root 3, and this is equal to beta and this is equal to gamma. Okay, so क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में हमें बताना था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो इक्वल होंगे. तो डायरेक्शन कोसाइंस सभी के क्या हो गए, cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma, and all three are equal to 1 by root 3. Okay, plus minus 1 by root 3. Okay, so the next question, find the vector equation of a line given by, I am not doing it because I told you earlier about it. Question number 10, equation of a line has been given, find the direction cosines of a line parallel to the above line. What we have to do, this is a HOTS higher order thinking question and comes in 2011. We have given an equation of line 4 minus x upon 2 equal to y plus 3 upon 2 equal to z plus 2 upon 1. Okay, we have given a line, ठीक है, and what we have to do here, we have to find equation of a line. Equation of a line, this is given. Okay, we have to find out the direction cosine of a line which is parallel to this given line. Let it be line first. ये हमें पता है कि ये line हमें equation दी हुई है. We have to find out the direction cosine of a line which is parallel about this line. So first we will reduce this in the standard form. So taking minus common, this will be x minus 4 upon minus 2. This will be y plus 3 upon 2. And this is z plus 2 upon 1. So direction ratio of this line will be minus 2 to 1. So direction ratio of the parallel line will be also minus 2, 2 and 1, because the line whose direction cosine we have to find out is parallel about this line. वो line इसके parallel है जिसके हमें direction cosine find करना है. So it is must that the direction ratio of the line which is parallel to this given line must be equal. So direction ratio उसको भी क्या हो जाएंगे, minus 2 to 1. So direction cosine will be L is equal to, we know that the formula, a root a square plus b square plus c square, m is equal to b upon root a square plus b square plus c square, and n is equal to c upon root a square plus b square plus c square. So here a is given as minus 2 upon root 2 to 4, 2 to 4, 4 plus 4 8 plus 1 9, that is 2 upon 3. Okay, m is equal to, what is b, 2, this is 2 by 3, and n is equal to, what is the value of c, 1 by 3. So these are the direction cosines of the line which is parallel to this line. Okay, now the next question is find the distance of a point from x-axis. Here we need to find the distance of a point P having coordinate 2 3 4 from x axis. x axis से इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. तो यार मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी रूट, एक्स कोऑर्डिनेट को हटा दो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज रूट 9 प्लस 16 दैट इज रूट 25, और यू कैन से प्लस माइनस 5. सिंस डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, सो योर डिस्टेंस विल बी 5 यूनिट. ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The equation of a line, this is all India 2008 में आया ये question, okay, of 1 marks. The equation of a line is 2x minus 5 upon 4 equal to y plus 4 upon 3 and equal to 6 minus z upon 6. Okay, this is the equation of line which we have given. Find the direction cosines of the line पैरेलल टू दिस लाइन. ये तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी. ठीक है. नाउ कमिंग टू द 4 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ मैं. 4 मार्क क्वेश्चन करेंगे आप. ठीक है बेटा, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको. ओके, सो दिल्ली 2014 में क्वेश्चन आया है. सो दैट द लाइन्स आर वेक्टर इक्वल टू I plus j minus k plus lambda time 3i minus j, and second equation of line is r vector is equal to 4i minus k, okay, plus mu time 2i plus 3k plus mu time 2i plus 3k, okay, 2i plus 3k. ठीक है. इंटरसेक्ट हमें शो करना है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव गिवन. सो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, फर्स्ट रिड्यूस इट in Cartesian form. So r vector is equal to I plus j minus k plus lambda time 3i minus j. तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ i 1 अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ i 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज 1 बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ j. दिस इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग. तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 1 माइनस 1. और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 3 माइनस 1 और 0. सो माइनस 1 z माइनस z1. z1 के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, माइनस 1 ऑलरेडी है तो प्लस 1 अपॉन यहाँ पे कोऑर्डिनेट है नहीं तो 0 एंड पुट इट इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा. सो फ्रॉम हियर x विल बी 3 लैम्डा प्लस 1 एंड y विल बी माइनस लैम्डा प्लस 1 एंड z कोऑर्डिनेट विल बी ये तो 0 ही हो गया, यानी कितना, माइनस 1. Similarly, the second equation of line is given as r vector is equal to 4i minus k, okay, plus mu time 2i plus 3k. So again change it into Cartesian form. So x1 4 upon a 2 is equal to y minus y1. j वाला कोफिशिएंट कोई दिख रहा है यहाँ पे, नहीं है, 0. So y minus 0 upon कोफिशिएंट ऑफ j, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0 is equal to z minus z1, coefficient of k is minus 1, so this will be plus 1 upon plus 3 and let it be mu. ठीक है, some constant mu. So x coordinate will be 2 mu plus 4, y coordinate कितना हो जाएगा, 0 mu plus 0 यानी 0 ही है, and z coordinate will be 3 mu minus 1. अब ये जो पॉइंट्स हैं और ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो बेटा यहाँ पे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, लेट इट बी L1 एंड लेट इट बी L2. इफ एनी टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होगा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट इट बी P. ये जो पॉइंट होगा ये कॉमन पॉइंट होगा, इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. क्लियर है, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है, कोई दो इक्वेशन उठाइए. ठीक है, सपोज यहाँ से आपने उठाया 3 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 म्यू प्लस 4. तो यहाँ से लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन बनेगी, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज 3, लेट इट बी 1. सेकेंड इक्वेशन क्या है, माइनस लैम्डा प्लस 1 और यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना है, 0. यहाँ y कोऑर्डिनेट है माइनस लैम्डा प्लस 1, दोनों के इक्वेट करेंगे. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1. लैम्डा की वैल्यू 1 उठाकर यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 3. सो माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0, म्यू इज इक्वल टू 0.
यानी लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया और म्यू इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई करना चाहिए थर्ड इक्वेशन को, और थर्ड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, दिस वन, z इज इक्वल टू -1 और यहाँ z की कोऑर्डिनेट कितना है 3 म्यू -1। सो अगर ये कोऑर्डिनेट इस थर्ड इक्वेशन को, दिस इज थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था, ठीक है ना, तो अगर ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ये कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे। सो लैम्डा की वैल्यू 1, लैम्डा तो है नहीं यहाँ पे, म्यू की वैल्यू 0 उठाकर यहाँ रखेंगे तो -1 इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाइड। ओके, तो अब सेटिस्फाई हो गया कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना उनका, तो लैम्डा की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 0, चाहे यहाँ उठा के रख दीजिए चाहे यहाँ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उसके। तो अगर यहाँ उठा के देखें तो देखिए x इज इक्वल टू 3 लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1, सो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, y इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0, z इज इक्वल टू -1। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चाहे यहाँ से फाइंड कर लो, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 0 0 टू उठाकर यहाँ रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू 0 है तो -1, सेम कोऑर्डिनेट आ रहे हैं देखिए 4 0 -1 4 0 -1। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइन्स एंड दिस इज द मेथड ऑफ सेटिस्फाइंग दैट बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। So dear student, this is all about from today's video lecture. In next video lecture we will discuss some more questions. Till then, bye bye, take care and beta work hard. Bye.